I don't think there is anything called love between a man and a woman. I think it starts with थैंक यू नीना जी, ये हमारे लिए करने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में वेरी वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट बहुत सालों से हम आपकी इंटरव्यू करना चाहते हैं, सो थैंक यू सो मच। मैं सीधे क्वेश्चंस पे जाऊंगी। हाँ जी। हाँ, अनअपोलोजेटिक, ओरिजिनल, रिबेल, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, ये कुछ शब्द है जो लोग आपके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर एक दो शब्द में आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे करेंगे? अब आपने कर ही दिया तो मैं अभी मैं अपने को कैसे डिस्क्राइब करूँगी? ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, यस। और ये जो ट्रेट्स हम अडल्ट बन के काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चाइल्डहुड से ही पैदा होते हैं। तो आपका चाइल्डहुड कैसे था? आप कैसे थी? मैं एकदम नॉर्मल, हम लोग रहते थे रैगरपुरा गली में रहते थे। शाम को गली में सब बच्चे खेलते थे, पोशंपा खेलते थे, खो खो खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे, विच इज़ कॉल्ड व्हाट इन इंग्लिश? लुका छिपी को इंग्लिश में क्या? Hide and हाइड एंड seek. सीक, उसको हम बोलते थे आइस पाइस। Okay. ओके। I have a brother, I mean, who's no more now. So I had a very normal childhood in a middle class family. हमारे घर में मेरी मम्मी मेड जो आती थी सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आती थी, बाकी हम सब खुद ही करते थे। कोई ऐसा नहीं था डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। तो मम्मी खाना बनाती थी तो किचन की खिड़की से हम प्लेट में डाल देते थे, दाल है तो वहीं से डाल लेते थे। इट वॉज़ वेरी सिंपल लिविंग। अब हमारे को कोई क्लब का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था। रात को 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी, गर्म दूध पी के सो जाते थे। हमारी आउटिंग होती थी, कभी कभी हम खाना खाने जाते थे कहीं बाहर डिनर पे। मेरी मम्मी को बड़ा शौक था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने का। वो हिंदी फिल्में नहीं देखती थी, तो कभी वो ले जाती थी, या फिर अपने रिश्तेदारों के घर में जा। दैट वाज द आउटिंग, दैट वाज द ओनली आउटिंग। अदरवाइज व्हाट I am living now is like totally different than what You grew kind of life I had. बस खेलते थे, बहुत मज़ा करते थे, होमवर्क करते थे। Yeah, that's it. और आपका सपना क्या था? आप क्या बनना चाहते थे उस वक्त जब आप बड़े हो रहे थे? क्योंकि रिसर्च में आया कि आपकी माँ चाहती थी कि आप आईएएस में जाओ, तो लेकिन आप क्या चाहते थे? एक्चुअली उस वक़्त कोई सपना नहीं होता था ऐसा। ओके। उस वक़्त यही होता था कि उस वक़्त हमारा मेन ये होता था कि अच्छा, मेरी मम्मी जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो एम्बेसीज़ दिल्ली में ना, अमेरिकन एम्बेसी या जो भी एम्बेसीज़ में ऑक्शन होते थे, तो मेरे मम्मी पापा जाते थे उसमें, और वो कुछ कपड़े भी लेके आते थे मेरे लिए, और जिसमें कुछ स्लीवलेस या स्पेगेटी, बेल बॉटम्स, उस वक़्त बेल बॉटम्स होते थे, लेके तो आती थी, बट शी वॉज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स इन सर्टन वेज। तो फिर वो मैं पहनती थी तो बोलते थे नहीं नहीं ये तो फिर खुद ही कहती थी, मैं ऐसे ही लेके आई, अब तू पहनेगी। सो शी वॉज लाइक दैट। माई मदर वॉज अ डबल MA एक्चुअली, एंड शी वॉज अ कांग्रेस वर्कर। खादी पहनती थी बहुत सालों तक, तो प्योर सिल्क और खादी पहनती थी। बहुत पॉलिटिकली बहुत अलाइव थी। तो जब इलेक्शंस होते थे तो हम बच्चे जो हैं वहाँ जहाँ वोटर्स बूथ में जाते थे, क्योंकि शी यूज़ टू टेक दिस थिंग टू वर्क ओवर देयर। फिर हम जाते थे कि वो डब्बे मिलते थे लंच के, उसके लिए जाते थे कि वो डब्बे मिलेंगे लंच के। सो या इट वाज अ मिक्स, बट इट वाज, माय मदर वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स in certain ways not at all. Okay. And did she play a big influence in your life while growing up? Did you imbibe certain qualities from Yes, her? yes, my honesty has come from her. From her. Yeah, she was too honest to live in this world. Actually, she was very big idealistic woman, and because of which she suffered a lot also, because idealism से जीना बहुत आसान नहीं होता. Absolutely. And so I got the best of both my mother and father. I got my honesty, commitment, and idealism a little bit from my mother, and I got
practicality from my father. Wow. My father was Yeah. very practical. Hmm. Okay, he lived with me many years here in this house. And my brother got the worst of both of them. Bichara. He suffered a lot also, yeah. So God has been kind. Yeah. That's such a nice way of putting it. I got the whole picture. आप सबसे करीब किससे थे घर पे फैमिली में, घर पे? एक्चुअली मेरे कोई नहीं था करीब बहुत. मम्मी ऐसी थी जैसे अभी मैं मसाबा बात करते हैं ऐसे हम बात नहीं कर सकते थे उनसे. अच्छा. फिर भी मदर से ज़्यादा करीब थी. बट यहाँ जब आए पापा मेरे साथ रहने देन तो वी वर वेरी क्लोज. मी एंड माई फादर. ही डिड अ लॉट फॉर मी हियर. एंड ग्रोइंग अप ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो जो आपको अभी तक याद आती है और आप यू स्माइल और यू रेमिनिस कि दिस वाज माय लाइफ बैक देन? एक हमारे घर के पीछे हमारा घर था, मतलब फ्लैट नहीं था, घर था. घर के पीछे एक और घर था, तो वहाँ पे एक लड़का रहता था जो एरिया का दादा था. वहाँ पे दादा होते एरिया के दादा, पंजाबी दादा. बंगाली दादा अलग होते, पंजाबी दादा अलग होते. इट वॉज अ बंगाली एरिया ऑल्सो. सो एक बंगाली दादा होते थे, एक पंजाबी दादा होते थे. सो आई हैड माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड हु वॉज फ्रॉम IIT. एंड अब ये हो गया कि वो बंगाली. अब ये हो गया कि पंजाबी लोग बोलते कि ये तो हमारी लड़की है, ये बंगाली के साथ कैसे इसको बॉयफ्रेंड है. तो हम बंगाली दादा की टैक्सी में जाया करते थे, मैं और बॉयफ्रेंड, अगर कहीं जाना होता था. इट वाज सो फनी व्हेन आई थिंक अबाउट इट एंड लाफ. और जो आपको ये टर्म रिबेल दिया गया है, वो आप चाइल्डहुड में भी ऐसे रिबेलियस जो आपने एक तो कहा, लेकिन देखो ये जो शुरू में आपने जो सारे वर्ड बोले हैं ये मुझे किसने दिए? मीडिया ने. मीडिया, करेक्ट. मीडिया को क्या मालूम मेरे बारे में? एक्सटर्नली जो एक्सटर्नली भी नहीं मालूम. करेक्ट. अगर मैं एक बच्चा पैदा करती हूँ बिना शादी के तो कितने लोग करते हैं, वो सब बोल्ड हैं. बोल तो उनमें से तो कोई बोल नहीं मुझे दिखा आज तक. सो दिस इज because of my stupidity of thinking that media is my friend, and when they talk to me I talk to them as if I'm talking to my friend, which was a wrong thing which I didn't know. So I would say things like, if I'll say something today also, it happened just 2 days back when I was giving interview for Uchai. I said something, उसका आधा सेंटेंस छोड़ के आधा मेन उसमें डाला. This is their job. I am not blaming them. I am blaming myself that I gave them fuel. And so they made my image like that. And I don't mind. चलो मैं किसी को जानती नहीं, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे बोल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे फ़र्क तब पड़ा और पड़ने लगा जब because of that I lost on work. Yeah. Because if you call me bold and rebel, then people gave me negative roles. Correct. That association हो गया. Association हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, bold and rebel woman means negative woman. तो the roles are written for बिचारी woman. So I got out of the category of बिचारी. So अरे मैं तो इतनी डरपोक होती थी कि कॉलेज में मुझे नौकर का छोटे छोटे रोल मिलते थे प्लेज में. मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाके बोलूँ कि आई एम बेटर देन दोज पीपल हु आर डूइंग द मेन पार्ट्स. आई कुड नॉट से. हमारे गली के पीछे सुबह एक भैंस वाला आता, दूध वाला आता था. तो भैंस का दूध निकाल के तो हम अपने बर्तन लाइन में लगा देते थे सब लोग. तो मेरी ड्यूटी थी सुबह दूध लाने की. घर के पीछे गली है. हाँ, गली के कोने पे दिस गाय यूज्ड टू कम एंड एवरीबडी अराउंड विल कम. अपनी बाल्टियाँ जो बर्तन है, पतीले, वो सब लाइन में रख देते थे और वो दूध उसमें डाल देता था. तो कई लोग बदमाशी करते थे, लेट आए, मेरा बर्तन पीछे हटा के अपना बर्तन आगे कर दिया. आई यूज्ड टू क्राई एंड गो बैक होम. आई डिडंट हैव द थिंग टू बी बोल्ड एंड रिबेल टू फाइट के ये मेरा बर्तन क्यों हटाया. करेक्ट. You see? So I want to say nobody knows anything about what is going on in anybody's house or what are they like. Neither you, not anybody who's here. This is a perception which
is my fault that I led to this because I did not know some rules of this business. And now you've learned. I have learned, but I still slip. मैं क्या करूँ, अपनी नेचर नहीं चेंज कर सकती. बट सी ऐसा रिबेल कुछ नहीं होता. कितने लोग कितना कुछ करते हैं. बट आई रिमेंबर वन डे लॉन्ग टाइम बैक Devanand had written in one article in one newspaper where he said, अभी बहुत लोग कहते हैं ना, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है. व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं हो सकती. वी हैव टू एक्सेप्ट एंड बी केयरफुल. हाउ टू बी केयरफुल? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कोई है नहीं, या हम जॉइंट फैमिली, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, तो मैं अपने कुलीग को बोलूँगी जिसके साथ काम कर रही हूँ कि कम विद मी. अकेले तो जाने का मन नहीं करता. If I am known, if I am famous, I can't do that. Yeah. I can't do that. So I have to suffer. But this is a part of the game. And it's a choice. Because I have so many advantages also of being known. Of course. है ना? Yeah. So वो है तो ये है ना? You take the good and the bad. हाँ. एक बहुत बड़े डायरेक्टर की वाइफ ने मुझे एक बार बोला कि कुछ बोला कि मेरा नाम क्यों आना चाहिए. आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मीडिया एंड दे राइट हिज वाइफ एंड ऑल दैट. मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने मन में सोचा, जब आप बड़े बड़े विदेशों में जाके बड़े बड़े लोगों को मिलती हो, क्यों मिलती हो? बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड ना. Correct. बिकॉज ही इज फेमस. सो यू हैव टू टेक दिस शिट ऑल्सो ना. Yeah. You can't have one. हाँ, you can't have. So same way we have to suffer a little bit because we get a lot of advantages also. Of course. And do you remember your first tryst with acting? कब हुई थी? I think इतना तो याद नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि एक बहुत फेमस प्ले होता था आधे अधूरे, मोहन राकेश का. यू वुड नॉट नो. तो किरोड़ीमल कॉलेज जो है उसमें एक फेस्टिवल था, उसमें आधे अधूरे करने थे. तो उनके यहाँ लड़के हैं और मैं थी जानकी देवी कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में. तब तक शायद कुछ छोटा मोटा किया होगा. तो मुझे उसमें 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के प्ले में. तो मुझे बड़ी लड़की, एक उसमें कैरेक्टर है, बड़ी लड़की का मुझे रोल दिया. और हमको हम तो बहुत दूर थे, यूनिवर्सिटी में नहीं थे, किरोड़ीमल, जहाँ से आई थिंक मिस्टर बच्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम किरोड़ीमल, सतीश कौशिक इज़ फ्रॉम किरोड़ीमल, लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज. एंड ये चेक कर लेना, मिस्टर बच्चन का मुझे याद. सो हमको वहाँ बुलाया, तो हम हमारे असल करते थे जाके. तो वहाँ सब हम लड़कियों को देख के, जैसे होता है ना लड़कों का कॉलेज, ये वो. सो वो मुझे याद है वहाँ क्या हुआ था, बहुत धमाल हुआ था हमारे शो में. ओके, वाह. तो दैट, वो फीलिंग याद है आपको? फीलिंग नहीं थी, वो बहुत धमाल था. सतीश कौशिक वाज देयर आल्सो. ही वाज आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द रोल्स इन आधे अधूरे. ओह वाओ, ओके. दिस इज स्मॉल वर्ल्ड. या. और बट आफ्टर दैट आपने काफ़ी प्रोफेशनल करियर चॉइसेस, आई मीन एकेडमिक चॉइसेस लिए. यू डन योर BA, MA और फिर MPhil. तो वो एक्टिंग और ये जो प्रोफेशनल करियर पाथ था, वो साइमल्टेनियसली कैसे हो रहा था? In college I had Sanskrit as a subject, but I really liked the literature. And so I took up my MA Sanskrit. And in the meantime, I got interested in plays, doing plays, theatre in Delhi. That's how I got into National School of Drama. Yeah. So then when I did my MPhil, my subject of my this thing was stage techniques in Sanskrit drama, theory and practice. Oh. Okay, so I wanted to combine my drama training with my Sanskrit. Okay. And I wanted to do my PhD in this subject. Yeah. And I enrolled for my PhD. I didn't want to do films. I wanted to do theatre and do the research. अब मुझे मेरी कोई गाइड ठीक नहीं मिली, जो जैसे मैं
जिस रास्ते से मैं ये काम करना चाहती थी, शी हैड अ डिफरेंट वे, सो आई लॉस्ट इंटरेस्ट. राइट. And then, immediately after passing out, Ashok Ahuja was making a film, the director producer, and he took all of us theatre people. Nasir भी था, अनीता, बहुत लोग थे, कौशिक के वो सब थे. तो then they took me. और फिर जब मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा, मैंने कहा अरे This is it. this is it. Wow. Yeah. And as this was happening in your personal life, you got married very, very young for the first time. You were 18. How Not was 18. You were not 18. अब याद नहीं मुझे कब. I think I was 20 or something. Okay. 20. पास ही है. Okay, so we'll correct. Something 20ish, yeah. So you were 20 when you got married, still very young. हाँ. So what was that like? और thought process क्या था भी, या you just fell in love and got married? So I was doing a play with this guy, again in some college. He was from IIT and I went from my college to do a play, and we met, and then we fell in love, and then we got married, and then it didn't work. All that happened. Yeah. And when it didn't work, what was your mentality then? Because back in the 80s, when marriage is typically you do anything in your power to make it work. It's very different today. So तब कैसे था? What did people say? What did your parents say? They were devastated. First of all, they didn't want me to get married so young. Correct. And somewhere I look for logic. बाहर जाना है बॉयफ्रेंड के साथ तो शादी के बिना नहीं जाना. तो इसका क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आया. जो चीज़ आप चाहते हैं मैं ना करूं वो तो मैं वहाँ भी कर सकती हूँ दिल्ली में बैठ के. इट्स वेरी सिंपल ना, लॉजिकली. तो वो लॉजिक नहीं समझ में आया. सो ऐसा कुछ हुआ नहीं खास, बिकॉज आवर मैरिज वॉज वेरी सीक्रेटिव. His because he was Bengali and I was Punjabi, and he didn't tell his parents, so not many people knew about it. We did an Arya Samaj wedding with just 3. 3 उसके दोस्त थे और 3 मेरे घर वाले थे. शादी के बाद he went, his grandfather used to stay opposite, like diagonally opposite our house. He was in hostel. He went to his house, I came to my house. It was like that. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah, it was a very different kind of thing. Not many people knew about Not many people. it. Yeah. Anything you learned from that experience, even though it was very brief? Anything that you deem a lesson? From the wedding? Yes, from the marriage, yes. You see, I'll give an example, then you would come to know. So, we were kids, even he was a kid. Yeah. Okay. उस टाइम तक हम लोग 25-26 साल तक किड रहते थे, अब नहीं रहते हैं. सो एक दिन तो हम अलग अलग हो गए. तो एक दिन उसने मेरे को कहा कि लेट्स गेट अ डिवोर्स, क्योंकि कल इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड अगेन और आई वांट टू गेट मैरिड अगेन फिर टाइम लगता है. सो लेट्स गेट डिवोर्स्ड. सो आई से ठीक है. सो वी वेंट, हिज ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर एक्चुअली. So anyway, we were in the court, and we were sitting waiting for our turn, and there were a lot of people sitting in the divorce enclosure, and he asked me, coke पिएगी? तो I said हाँ, coke ले आना. तो हमारे साथ एक कपल बैठा था. They were very surprised कि तो divorce लेने आए हैं, and he's so sweet. He's asking her कि coke पिएगी, coke ले आना. So you know what I learned from it is कि bitter नहीं होना चाहिए. इफ यू लव समबडी वंस, उससे नफरत कैसे हो सकती है? करेक्ट. यू कैन नॉट सडनली हेट, यू नो. वी डोंट मीट ईच अदर. आई मेट हिम आई थिंक आफ्टर 20-30 years one day somewhere out of Bombay, and we were so sweet. We talked about my brother and my parents. Sweet. I talked about his daughter and all. So बिटर होना, ये गंदी बात कहना. So I have learned कि thank God my first boyfriend was a decent guy. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So that's great. That's an amazing perspective to look at something like that. And now at this point in time,
एक्टिंग आपने चालू की थी, you've gone to NSD, तो how was NSD? एंड रिसर्च में आया कि सतीश कौशिक ने ही आपसे कहा कि you should enroll, I'm enrolling. No, no. The story goes like this. You have time Yeah, for the we have stories? all the time. So one day, so I was doing theatre outside privately, this thing, and one day Satish Kaushik was in NSD. He's I think 2 years senior to me. So इनके जो वहाँ हेड होते थे, द चेयरमैन ऑफ NSD वाज इब्राहिम अलकाजी साहब. ओके. तो एक दिन उसने मुझे रिहर्सल देखने के लिए बुलाया. मैं भी रिहर्सल देख रही थी, तो अलकाजी साहब उसको कुछ एक सोल्जर बना हुआ था और उसको सिखा रहे थे हाउ टू पिक अप हिज हील. उसको अच्छे से एक्टिंग सिखा रहे थे. मैंने कहा यार मुझे इन्हीं से एक्टिंग सीखनी है, और उनके बारे में इतना सुना था, इतना सुना था. तो फिर मैंने कहा मेरे को भी जाना है. मम्मी वॉज अगेंस्ट ये वो, पर मैंने कहा मेरे को जाना है और हॉस्टल में रहना है, क्योंकि लगता था फ्रीडम मिलेगी हॉस्टल में, जो मन करेगा करेंगे. एंड देन वहाँ पे NSD में स्कॉलरशिप्स मिलती है. कोई स्टेट स्कॉलरशिप से आता है. आई गॉट आई थिंक साहित्य कला अकेडमी, और ऐसा मेरे को कुछ मेरे को मिल गया स्कॉलरशिप. 400 रुपये मिलते थे महीने के स्कॉलरशिप. And I enrolled, and my bad luck, as soon as I came in, Alkai Sahab left. Okay. Yeah. But I learnt a lot. You learned a lot. I learnt a lot. Not just acting, but so many things I learnt. और आपकी फर्स्ट फिल्म आधारशिला. तो उसके बारे में बताइए. आपको कितने रुपए मिले? हाउ वाज इट बैक देन? So there's this guy Ashok Ahuja, and he wanted to make this film. Adharshila is a film about Nasir making a film. Right. Yes. Okay. And उसमें हम सब लोग थे, सारे थिएटर के लोग थे. तो कोई पैसे वैसे की तो बात ही नहीं थी. अशोक के घर में जाके हम लोग सब रिहर्सल करते थे. उसकी वाइफ खाना बनाती थी, और हम लोग सैंडविचेस भी अपने घर से साथ में लेके जाते थे. इट वाज अ घर का थिंग. उसका मज़ा आता था. आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बिकॉज माई मदर सेड कि वहाँ लड़के भी होते हैं स्विमिंग में, तो मैं नहीं जाने देंगे. तो मेरे को स्विमिंग नहीं सीखने दी. तो मेरा सीन था आधारशिला में कि मैं साइकिल चला रही हूँ स्विम सूट पहन के. ना मुझे साइकिल चलानी आती थी, ना मैंने कभी स्विम सूट पहना था. तो मेरी मम्मी अमेरिकन एम्बेसी से एक बार स्विम सूट उठा के ले आई थी. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज लाइक टाइगर नेट विद टाइगर प्रिंट एंड ऑल. वेरी नाइस. आई हैड अ वेरी गुड बॉडी एट दैट टाइम. सो एक तो एम्बैरेसमेंट की वो पहनना है, ऊपर से साइकिल पे बैठना है. फिर वो अशोक आहूजा के पीछे गली में कौशिक और इन लोगों ने मुझे साइकिल चलानी सिखाई. फिर मैंने वो पहना ऐसा ऐसा करके. उसके बाद वो सीन हुआ. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. द फर्स्ट. नो मेकअप, नथिंग. और फिर आप बॉम्बे आए 1981 में. वो एक्सपीरियंस कैसे था जब आप पहली बार, आपने कहा था कि बॉम्बे के साथ एक स्मेल एसोसिएटेड है, तो वो बॉम्बे का पहला एक्सपीरियंस कैसे था दिल्ली से आके? आई केम विद द गांधी यूनिट. ओके. आई वाज प्लेइंग अ रोल इन गांधी फिल्म, एंड मेरा एक छोटा सा सीन बॉम्बे में था. तो हमें जो पैसे मिले थे, उस थोड़े से पैसे मिले थे, उससे हम काफ़ी सारे थिएटर के लोग बॉम्बे आए. सो आई लैंडेड विद बैग एंड बैगेज इन बॉम्बे विद द गांधी यूनिट. ओके. I came because I had a boyfriend in School of Drama. We were very serious about each other, and he also came. If he was not coming, I wouldn't have come alone. Oh wow. Okay. Yeah. He came, and then he troubled me a lot. He had affairs. He had this, that. So we broke off. Then we came back again. It was very tough those days. They were very tough. And how old were you at this point? 65, 75, 25, 26. So was there marriage pressure at this point? My mother never pressurized me for marriage. It was, I never had marriage pressure. Ever. So that's nice. It's refreshing. Yeah. Fortunately. Yeah. So then how did you permanently move to Bombay?
after this whole up and down of you know? So I came here, and my brother's friend's friend लिविंग इन सैंटा क्रूज, मुझे उनके घर में रहने का बोला गया. Oh, okay. मैं अपना सामान लेके पहुंची सैंटा क्रूज टैक्सी लेके, एंड आई रंग द बेल. आई डिडंट नो दोज पीपल, Yeah. बट and the lady opened the door and she smiled, and I said, I'm this. So she said, come in. But from her tone I realized she didn't want me. Oh, okay. वो कर रही थी क्योंकि बोला था. Somebody has told him. Yeah. मैं वहाँ बहुत बाथरूम में जा के रोती थी, एंड यू नो लाइक कोई काम तो था ही नहीं ऑब्वियसली. Yeah. तब सिर्फ फिल्म्स थी. Yeah. फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, तो उन्होंने बोला थोड़े दिन होटल में चली जाओ, तब तक हम देखते हैं. फिर मेरी मम्मी के एक फ्रेंड जो उनके बचपन से उनके घर में आते जाते रहते थे, उनके यहाँ कलानगर में मुझे भेजा. They were amazing people. They took you in. Yeah. They had 2 daughters. One was married, the other Niru, and my that auntie was very nice. Yeah. Very nice. I always kept in touch. Now she's no more. Yeah. Even Niru's just died. But they really were very nice. Yeah. Then I shifted to Khar as a PG. Khar Oh. station से लगता हाँ. हुआ. With the 2-bedroom hall, एक old widow lady was living there. So one room was shared with 2 women. 500 rupiah each. Wow. So that's where I shifted. And then you began doing theatre. You started doing shows Yeah. here. Yeah. So how was that experience? You were just, did you feel that insane amount of passion just to be acting, or what was the thought I process? never felt any passion because my goal was to do films. Films, correct. I did it because I liked acting. So I did it, but पैसे नहीं आते थे ना ज़्यादा उससे, Correct. theatre से. So how were you managing your finances at this point? So there were some nice people I met, like Prahlad Kakkad, like कैलाश सुरेंद्रनाथ. वो मुझे एक एड्स में छोटा दे देते थे. एक क्लोजअप का 500 रुपया मिल जाता था. ऐसे करके थोड़ा मदद करते थे. देन प्रहलाद कक्कड़ यूज टू मैनेज पृथ्वी कैंटीन. मैं वहाँ भरता बनाती थी, तो मुझे फ्री डिनर मिल जाता था. Wow. सो ऐसे करके छोटे मोटे रोल करते, किसी फिल्म में सर्वेंट का रोल ऐसे करके चलता था. गाड़ी चलती थी, और बीच बीच में घर जाती थी, तो सारा कपड़े जो भी चीज़ है, मैं कुछ तो यहाँ खरीदती नहीं थी, पैसे नहीं थे. सो माय मदर यूज्ड टू कीप अ बिग बैग. उसमें स्नैक्स से लेकर सब कुछ, चॉकलेट से लेकर सब कुछ होता था उसमें. How sweet. And it's around this time that you met Viv Richards also. No, I met him after a long time. Oh, after a long time. Yeah. Okay. So do you want to talk us through that part of your life that happened? So, well, I was shooting in Jaipur, and then one day the cricket matches were going on. So one day the Maharani Jaipur called Vinod Khanna was in our film. It was Rihai, or no, it was JP Datta's film, Batwara or something. I've forgotten. And yeah, JP Datta's film. And तो हमको कुछ लोगों को वहाँ महल पे बुलाया, पैलेस में बुलाया. So I went. I remember Vinod and a few other people, and we went for dinner, and they had called the team also. Okay. So there I met him, and just happened. It just happened. And how do you look at that part of your life? Because you said that, when you did get pregnant, you were giddy with joy. You just gave an interview. But were you nervous and scared? I was not very giddy with joy. Okay. I was happy because I loved him. And then I asked him, I called him and I asked him that if you don't want this child, then I won't have it. And then he says, no, I would love you to have this child. So then everybody told me, no, how will you do it alone? Because he was already married, I couldn't marry him and couldn't go to Antigua to live there and all that. Right. So, but क्या होता है जवानी में,
you are blind. When you are in love, you don't listen to anybody. No children will listen to their parents. ये मत करो, वो मत करो. So how I was the same. Yeah. And so when, okay, you've decided that I'm going to keep the daughter and the baby. What did your parents, what was the reaction? My mother was not there. Oh, okay. Yeah. Right. My father was against it. My brother was against it. But when the time came, when I delivered and all, my father came and he was my biggest support. Wow. Yeah. And how did you arrive at this decision? Because in the 80s, this is unheard of, right? Even today, I think people would be shocked. So how was your resolve so strong, you know, that I told you, no, blind, it was just blind? in love, Yeah. young, Young. all these things. Yeah, yeah. And after that, what was life like as a single mother? Very tough. Very, very tough. Because, yeah, every which way it was tough. But my thing is that I'm that kind of a person. If I have decided something, then I will do it on my own. I will not ask anybody. I never asked any financial or emotional support from anybody. Right. So I was happy Musaba ke sath. How did you come up? You know, you just mentioned the name. How did you come up with the name Musaba? Vivian gave the name. Oh, he did it. Yeah, Okay. yeah, Okay. Because it's so unique for the Indian. Yeah. It's a princess in their mythology. Wow. Yeah. And as you were raising this daughter, you obviously had to work to support this life for both of you. So who was your support system? Dad. He was there. Did he actively hands-on? Absolutely. Yeah? He was a man in my life. Wow. Wow. Yeah. And you know, when typically when the children are growing up, they ask. So then Musaba used to ask about her father. What was the kind of No, we conversation? were in touch. Sometimes, Right. sometimes not. Those are very, very long Yeah. details. But I told her everything frankly, that whatever is the truth. So you see, it's very important to tell the child the truth. Correct. Otherwise, he or she will find something from somewhere, hear something from somewhere. It's better to tell her and let her adapt to it. Right. Right. And what was a typical day in your life at this point as a single mother, with you working and with Musaba, if you had to go? Oh, Back to it the was days. very tough. Yeah. It was like I used to come back tired because TV I started doing. Na? Correct. I used to get good money and all. I used to work 12 hours, 14 hours. I'll come back home. My dad wanted to talk to me. Musaba wants to talk to me. And I don't want to talk to anybody. I wanted to sleep. So it was pretty tough. It was tough. But now looking back, it was worth it, obviously. course. Of course. Yeah. And was co-parenting right now, today as a concept, is very accepted. But you actually did it in the 80s. So how was that process? You know, like in the sense that the involvement from his side, how was that kind of in your life? I don't think I want to talk about it. Okay. I want to talk about me raising her. Why should I talk about him? Fair enough. Yeah. Fair enough. Fair enough. मैंने तो मैंने की नाम में Of उनका क्यों लूं? course. हाँ. Of course. Fair enough. Yeah. Okay, and then we'll go to your, you know, your iconic Choli Ke Piche, which happened. That one song that kind of everybody remembers for generations, right? Not just that time. It actually started with a no. You said no to do it, right? So walk us through that break. I mean, not a break, but you know that moment. Yeah. So Subhash ji had told Satish Kaushik to ask me to meet him. And when I met him, I said no because it was, I thought I'm an actor. ये तो एक गाना है, उसमें भी माधुरी का गाना है, मेरा तो इतना सा है. Then I said no. Then I met him again. फिर से उन्होंने सुनाया. फिर बोला देख तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. फिर ऐसा कर लिया. I did a lot of shows where I used to do the whole song. Yeah. But उसके बाद फिर मुझे मुसीबत हो गई ना. Everybody offered me the same thing. Correct. Then I again didn't have work for some time.
But after this, you also took a direction towards direction. Yeah. So what was that process like? for I you? think it was Vivian's idea. Okay. I was very upset that I was not getting parts which I want to do. Hmm. I think it was his idea. He said कि अपने लिए क्यों नहीं कुछ बनाती हो? Wow. Make it for yourself. Find something. And then the सांस happened. Correct. उसके पहले मैंने डायरेक्ट किया था प्रोड्यूस दर्द एंड गुमराह Hmm. for DD Metro. Then I made this सांस. I produced, directed, acted in it. And then I did lots of series. Of course. And by this point, you'd won national awards. You had a lot of critical acclaim. And the masses were very, very fond of you. So, did you feel like I've arrived, or was it still like मुझे वो leading lady role नहीं करना मिला है? ना, हाँ नहीं मिला. नहीं. And you, but was that something that you felt it's Very bad. incomplete? Yeah, It's Yeah, incomplete. वो break Yeah, नहीं मिला. yeah. But that break happened at 50. When at More much than 50. 50. Yeah. बधाई हो से But break मिला. yeah. So what was that feeling like, you know, कि इतने सालों के बाद हुआ, you know, it happened. अब मुझे मालूम नहीं था कि बधाई हो इतनी हिट होगी और हमको इतना काम मिलेगा उसके आगे. Sometimes even now you feel a little this thing कि अरे I wish I was young today. Yeah. You know, then you would do this part. But then my biggest strength is that I say thank you to what I have and make the most of it. मैं इतनी साधु नहीं हूँ that I don't think of past. I don't Yeah. get sad about past. I do, but there are. It's like a wave which comes and then it goes. And I tell myself, at least now only you got so much. At least be thankful about Yeah. it. Yeah. Because नहीं मिलता बधाई हो नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता. Yeah. वही छोटे छोटे रोल करती रहती और maybe would have gone back to TV or something. Yeah. Yeah. And even before that, you know, a significant life event happened. You met your now husband. So what was that like, you know, after मेरा ना all कुछ plane से संबंध है. I met him in the plane. So, yeah, that was a very nice phase, and it was difficult because he was already married with 2 children. It was very, very tough time for me. Okay. Very, very tough time. Right. निकल गया. समय है बीत जाता है. निकल गया. And how was love different at 49 than it was in the previous phases of your life, right? Like, what did you experience that was different this time around? You know, I feel that I don't think there is anything called love between a man and a woman. I think it starts with lust. And then if you get along, you become affectionate to each other. Then it becomes a habit. I think the only love I have felt is for Masaba. Wow. I don't know, other people might have felt, but मुझे नहीं love समझ में आता. Same. Same. ये सब वो lust होता है शुरू में. उसके बाद it can take any direction. You marry or you don't marry, and you go to somebody else. You know, I feel it's only with a child that love I feel That deep that I sense. can do anything. Anything for her. Wow. That's amazing. Yeah, for my husband, I do a lot, but I will not do anything for him like I will do for Masaba. Yeah, I understand. And आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपका टैलेंट आपकी उम्र को नहीं पहचानता. You said this in one interview. हाँ, Yeah. मैंने कहा था Yeah. क्या मेरा टैलेंट? आपका टैलेंट आपकी उम्र को नहीं पहचानता. हाँ, something like that. Yeah. So after, you know, before you, I mean, around the time Badai Ho, before that, you had actually posted on Instagram saying, you know, give me work, which is very, very rare. I don't think we've seen it often, कि मुझे काम दो. So how did you, I mean, what was that burst of, you know, like, now I need to make it happen.
So when I got married, my husband is from Delhi. So people automatically thought that I've shifted to Delhi and I don't work. Oh. ये मीडिया ने मेरे बारे में फैला दिया दबा के. हाँ, तो मुझे काम नहीं मिलता था because I wanted to work again. Yeah. And एक दिन मैं कहीं गई और एक लड़की ने मुझसे पूछा, अरे when did you come to Bombay? And I was living in Bombay. Yeah. He used to live there and we used to commute. Either he will come or I'll go. I got so angry. I came home and मुझे इतने अच्छे से इंस्टा पोस्ट नहीं करना आता था. I had 11,000 followers at that time. मैं गुस्से में पोस्ट कर दिया that I live in Delhi looking for work. Yeah. I live in Bombay looking for work. तो मैंने कहा मसाबा तो मेरी जान ले लेगी. गुस्से में तो लिख दिया. उसके बाद I said अरे मसाबा तो मारेगी मुझे. Then Musaba wrote such an emotional thing on it. People used to be so emotional when I'll meet somebody on the beach or somewhere. They'll have tears and say, "You are so brave, you wrote that." But Wow. yeah, it was very nice. But मुझे उससे ज़्यादा काम नहीं मिला. नहीं मिला. छोटे छोटे रोल मिले. एक मुल्क में मिला, संदीप पिंकी फरार में मिला. पता नहीं वो पढ़ के मिले या वैसे ही मिले. I don't know. और बधाई हो के बाद लाइफ कैसे बदल गई? दिवाली हो गई. Yeah. So what was it like? Then you were inundated with roles and नहीं ऐसा नहीं होता inundated. लोगों को लिखना होता है, सोचना होता है. Yeah, I have done very good parts and Yeah. I am in future also I have some good projects in hand. Wow, very exciting. और ये जो never too late वाली feeling जो है वो आपके नए फिल्म में भी है, which is ऊंचाई. So can you talk us a little bit about that role? So when I came here new in 80s, तो सबने कहा कि राजश्री के साथ पिक्चर करनी चाहिए तभी तुम बड़ी स्टार बन जाओगी. अच्छा. तो we used to go और उनके ऑफिस का चक्कर काट के तो जाने का तो सवाल ही नहीं पता क्योंकि everybody wanted सूरज जी and राजश्री. So कुछ नहीं हुआ. फिर मैं भूल गई. मैंने कहा यहाँ तो दाल ही नहीं गलनी तो छोड़ो. फिर किसी ने कहा उनके गुप्ता जी हैं उनसे मिलो वो करा देंगे. गुप्ता जी से भी नहीं मुलाकात हुई. शायद एक बार हुई. कुछ हुआ नहीं. So for me when Suraj ji called me to narrate a role to me was like my God, what is this happening to me? क्योंकि वो you feel it's an honor because of whatever you have heard, you have seen. And then when he was narrating the script to me, I went to his office. मैं आधी सुन रही थी आधी उड़ रही थी कि ये होगा. फिर कोविड की वजह से 2 बार डेट लेके चेंज की. तो मैं उनको मैसेज किया. मैंने कहा मेरा मुहूर्त कब आएगा. मुझे डर लग रहा था किसी और को ना मिले. How sweet. You know? Yeah. So it was an amazing experience working with him, with everybody. You feel like a family. You feel he is so soft spoken and he knows what he wants. It was a lifetime experience. Wow. Working on this movie. And the film is all about friendships. So can you tell us a little bit about the friendship angle with your co-stars who are all so established, also known? So what was it like on set? See, I had worked with Anupam before. First time Sarika, first time Baman. I had done Goodbye with Mr. Bachchan already. You see, what I always say is that when you work with experienced actors like even Pariniti and Sarika, Pariniti, क्या होता है ना, there is no ego. Yeah. There is no competition कि मैं इसको ये लाइन मिली है मेरे को. It is so mature. The atmosphere is so matured, I'll say, that you are very easy. आपको अपने काम से मतलब है. We used to play games, word game, dumb charades, and a lot of discussion about food. Lunch में क्या खाएंगे, क्या order करेंगे, like that. It was a very friendly atmosphere. Yeah, it was fun. Like the It set was fun. The set was fun. Yeah. And पर सुबह उठ के ऐसा लगता था हाँ शूटिंग में जाना है. ये नहीं कि oh God शूटिंग में जाना है. You know. Okay, so now we have a fun segment. It's called Things About Me You Can't Find on Google. Okay. Who's your favorite co-star?
मैं कभी नहीं बताऊंगी, फिर दूसरे लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे. नेवर एवर आई विल टेल. Okay. One thing about Masaba that you love and one thing that you tolerate. I love her being able to laugh at herself, and I tolerate her using chemical stuff. Okay. What is the one thing that you're most grateful for today? Saba. One role that you want to play. Carmen. Okay. A character from a book or film that's inspired you. मेरे को कोई इंस्पायर किया ही नहीं आज तक किसी ने. How do you spend your time off? Oh, I love singing. Oh. I love reading. I walk. I do yoga in the morning. I walk in the evening. I watch Turkish series. I have lots of interests in life. It's great. Yeah. I love cooking Wow. Okay. and eating. Your comfort food? Vada pav. Yeah. सब हंस रहे हैं. हाँ. Yeah. Everybody loves vada pav over here. A myth about Bollywood that you'd like to bust. कि सब स्टार्स जो हैं वो चांदी के पलंग पे सोते हैं और सोने के लड्डू खाते हैं. वो सब दाल चावल खाते हैं. A rumor about you that's not true. There's so many things about me which are not true. Yeah. So many. Anyone that you'd like to correct? That I am bold. क्या बोला था शुरू में आपने? Rumor क्या है जो सही नहीं, शुरू में क्या बोला था मेरा? Bold. Oh wow, I have to really look for this. Unapologetic, original rebel, bold and ये confident. सब मिथ है. सब myth है. हाँ. Okay. So you would have to give new introduction to me तो ना भी बदलना after पड़ेगा. this. Yeah. What's your guilty pleasure? My guilty pleasure. I don't want to say. Okay, fair enough. If you could go back in time, what would you do differently? Maybe I'll become an IAS officer Oh, wow. and serve my nation. Very interesting. A piece of advice for upcoming actors? लगे रहो. Don't be shy asking for work. I was very shy. I never used to call people thinking that अरे इतना फ़ोन करूँगी तो चिढ़ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. Here you have to be at it. Keep doing hard work. What I have understood that, say for example, I want to get a role in a film. So I do a lot of hard work to get it. Yeah. But I don't get it. But because of that hard work, I get B. Correct. If I did not do the hard work to get A, I would not get B. This has happened to me. Yeah. Yeah. घर In में life बैठे also- रहोगे तो हाँ, नहीं होगा. नहीं होगा. You have to go and get it. हाँ. Correct. Okay. Now this is a new segment. हमने आपके बहुत पुराने फोटो ढूंढ लिए हैं. So you have to tell me the memory associated with that photo. Okay. Okay. First image is this. This is Mukteshwar house in COVID. Yeah. Yeah. And what was happening? What is the situation? You know, we used to cut each other's hair. There was nobody. Actually, for 6 months, I did all my waxing myself. Oh wow. Upper lip myself. You know, so this is, he did it to me, I did it to him. Yeah. This is that memory. photo. Yeah. Okay. Another memory. This one is very old. Oh, this is Jaane Bhi Do Yaar. Yeah. Yeah. So it's a memory associated. With Yeah, this photo. beautiful. Yeah. What a time we had. Yeah. It was a very low budget film, so
मैं ऑटो रिक्शा करके जाती थी शूट पे अपने. आई वोर ऑल माई ओन क्लोथ्स इन द शूट. ओह, हाँ लो बजट. हाँ मेजरली लो बजट यार. NFDC लो बजट फिल्म. एंड दिस वन. Oh, this is Masaba and me. She was very small. I was also small. This is my bua's house, I think. I used to go to my bua's house. She used to help me a lot. Well, to take care of Masaba. Yeah. Oh, wow. Okay. And now the last question. What piece of advice would you give the 40-year-old Neena? 40-year-old Neena. Yeah. काम पर ध्यान दो, आदमियों पे नहीं. Universal advice. Yeah, इसी के universal. इस पे. Okay. Great. Thank you so much, Neena ji. It was lovely. Everybody, you. it was just such a honest, real, refreshing interview. और मैं bold बिल्कुल नहीं कहूँगी हाँ. intro में. वो बदलना है. आप real कह दो. Real. Yes. It was a real interview. Yeah. With the real me. With the real you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon. In my entire school life, from the 2nd to the 8th, जो मैं सेंट एंस में रहा हूँ, ऐसा एक साल भी नहीं गया है जब हम लोग ने टाइम पे फीस दी है. कोई भी एक, तो हमेशा हम लोग का नाम वो नोटिस बोर्ड पे आता था, और फिर वो कब ज़्यादा लंबा हो जाता था तब फिर वो असेंबली में नाम बुलाते थे कि भाई ये बच्चे की ने फीस के पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी है, तो हाँ सबके सामने. अब अच्छा, फनी पार्ट ये था कि स्कूल में सबको लगता था कि यार ये तो प्रोड्यूसर के बेटे हैं. तो वो थोड़ा हम लोग के लिए बहुत ऑड होता था. तो घर पे तो फिर क्या होता था कि फिर अब्बाजान जब फ़ोन बजता था वो बोलते थे कि आप फ़ोन उठाओ, तो हम लोग फ़ोन उठाते थे. फिर हम लोग बोलते थे कि नहीं अब्बाजान घर पे नहीं है, तो वो हम लोग को बोलते थे कि भाई उनको बोलो फ़ोन आया है सो एंड सो का, उनको ही ओज अस मनी एंड ऑल दैट. इन द सेंस दैट ये प्रॉब्लम्स थे, बट हम लोग बड़े कंफर्टेबल थे. हम लोग को जो लाइफ अब्बाजान ने दी है और अम्मी ने दी है वो बहुत अच्छी लाइफ थी, विथ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, एंड दे लुक्ड आफ्टर अस वेरी वेल. Tissue. कुछ ज़्यादा ही रो रहा हूँ.